बनेगा भी तो। बना है कैसे नहीं, अभी तो हर सबका फर्स्ट बॉल पे छक्का मारता है। बना कैसे नहीं, कम है उसको मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। समस्तीपुर का है। नेल्सन मंडेला की बात करना है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। अफ्रीकन लोग जो होते हैं थोड़ा देखने में ब्लैक होते हैं, क्योंकि जो है तुमको पता है वहाँ का जो है टेम्परेचर, वहाँ की जो है एटमॉस्फेयर, आबो हवा, वो सब जो है डिफरेंट है। तो ब्लैक लोगों के साथ अफ्रीका अफ्रीका को जो है ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है कि ज्यादातर लोग जो वहाँ के हैं ब्लैक हैं, और वहाँ जो रिसोर्सेस जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग जो है ना उस रिसोर्स को जो है ना यूज मतलब ज्यादा नहीं करते। वो रिसोर्स उसको पता है, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा लोग उस चीज को नहीं। तो उस समय क्या होते थे, जितने सारे जो है कॉलोनाइज, जैसे फ्रांसीसी हो गया, ब्रिटिश हो गया या डच हो गया, ये सब जो है एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करते थे, और वहाँ के रिसोर्सेस को जो है यूज करने के लिए वहाँ पर अपनी हैवी मशीन्स या टूल्स को ले जा करके वहाँ क्या करते थे, उस रिसोर्स को यूज अपने कंट्री में ले जाते थे। ये तमाम तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो और वो लोग जो है ना यहाँ के लोगों को मतलब जो है, जो ब्लैक जो अपने से मैच करता है उसको वो इंसान समझते थे, और बाकी को जानवर, इंडियंस को भी वो इसी तरह ट्रीट करते थे। ठीक है। तो उसके साथ बहुत ज्यादा जो है एपरथाइड, एपरथाइड होता है यहाँ एक एपरथाइड वर्ड आया है जिसका मतलब होता है रंग भेद, नस्ली भेद। आप रंग भेद ब्लैक्स है तो आप उसे नफरत करेंगे, व्हाइट है तो वो आपको आपका देंगे। इस तरह की उनके अंदर जो है भेदभाव, हाँ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ हाँ हाँ। सब्जी लेने में मस्त वो ग्रैंड माँ पे डिपेंड है कि टाइम सी विल 10 एक्सपेंड। मिनट हो चुका है सर। या डोंट माइंड, जाने में भी गई होंगी, पहुंची होंगी मैं भी, फोटो ले जाएगी सर। डोंट माइंड, फिर भी जाम रहता है। तो मंडेला जी तो जो था ये एपरथाइड से मतलब इसके सिग्रेसिव थे, और पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल टू अकाउंट देयर रेस, कैन यू से विच ऑफ दिस थ्री कंट्री नेम बिलो, such as the political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. Have you heard नेल्सन मंडेला? क्या नेल्सन मंडेला के बारे में तुम सुना है? नेल्सन मंडेला अफ्रीकन was the first black हाँ, president of the Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against to the apartheid. Mandela had spent 30 years as a prisons, वो एक प्रिजनर की तरह जेल में कैदी की तरह जो है अपने 30 साल जिंदगी बिताए। एंड फाइनली द democracy democrat क्यों रहा था elections सर वो? election where they held the South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of new nations. क्यों रहा था सर? मंडेला जी जो थे, देखो आपको पता है ना, अभी मैं बताया फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, ये सब जो है ना दूसरे को जो है अपने से जो मैच नहीं करता था उसको क्या कह देता था, ब्लैक कह देता था। और ब्लैक है तो उसको मतलब उससे भेदभाव, उसकी जो है वो कैटेगरी में नहीं आता, तो उसको जो है साइड ये जानवर समझता था। ठीक है, क्योंकि उससे मैच नहीं खाता था। एक समाज में जो है एक जो है इस तरह की जो है मोनोपोली थी, और वो मोनोपोली को हमेशा वो लेके चलता था, और वहाँ के रिसोर्स पर वो बहुत अच्छा से यूज करता था। वहाँ पे बहुत सारे जो है गोल्ड माइन है, या वहाँ के जो रिसोर्सेज आयरन है, कोल है, वो सारा कुछ को रिसोर्स को जो है अच्छे से यूज करते थे। बट रिसोर्स को यूज करना, लेकिन वहां के पीपल से जो है हार्ड लेबर करवाते थे, उसको जो है हार्ड लेबर करवाते थे, यानी टी गार्डन में जाकर के जो उसको कहता था तुम चाय पत्ती की खेती करो, मजदूरी करो, खाने पे उसको जो है इस तरह का जो है उसको जो है खाना दे करके जो है काम करवाता था। बस इस तरह की जो है पैटर्न को जो है वो समाज में
बना के रखा हुआ था। तो जब कोई पढ़ेगा लिखेगा तो इसका विरोध तो करेगा। हाँ, हमारी इंडिया में भी वही थी। हमारे इंडियंस जो अभी तुम जा देख रहे हो कि जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, कुछ जो है उसको भी यहाँ से वो उठा के ले गया वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी करवाने के लिए, ब्रिटिश काम के लिए ले जाता था, और वहां जाकर के वो रह गए, वहां जाके बस गए, फिर जाकर के जो है वहां के वो एक सिटीजनशिप बन गए, सिटीजन उसको मिल गया। तो नेल्सन मंडेला जी भी जो है फर्स्ट ब्लैक, वहाँ व्हाइट लोगों का चलता था, व्हाइट डोमिनेंट बना के रखा हुआ था, जो काम करेगा व्हाइट ही करेगा, ब्लैक को कोई राइट्स नहीं है, उसकी राइट्स को जो है पूरा खत्म कर दिया गया था। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी Long's walks to freedoms, Mandela speaks about the historic occasions in inaugurations. You guess what occasions might be. Check your guess. And this news items from the BBC of 10 May 1994 की है. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rules. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. The inauguration ceremonies took place in Union Building Amphitheatre in Pretoria. Today, attended by the politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will be beautiful and experience the oppressions of one by another, said the Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremonies with blacks, whites, and the colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, children, all races sang the dance with joy. उस समय जो है कोई भेदभाव नहीं, बिना एपेटाइट का जो है सभी लोग जो है जो है चिल्ड्रंस हो, वुमेन्स, मैंस, अफ्रीकन्स, वो सभी जो मिलकर डांस किया और सॉन्ग्स एंजॉय किया. दी 10th May dawns bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by the dignitaries and the world leaders who were coming the pay to the respects before the inaugurations. The inaugurations would be the largest gathering ever to the international leader on South African soils. साउथ अफ्रीकन सोयल्स पर इंटरनेशनल लीडर की ये धमक, ये आवाजाही एक जो है बहुत ही बड़ा मायने रखता था. एंड द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades this had been site of the rainbow gathering of different colors and the nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. On that lovely autumn's day, I was accompanied by my daughters Janani. On the podium, Mr. Dak Clark first sworn the second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold constitutions and devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of the extraordinary human disasters that lasted too long,
must be born in society of which humanity will be proud. We who were the outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nation and ward our own soils. We thank all our distinguished international guests for having come to take processions with the people of our country. What says what after all common victory for justice, for peace, for human dignities, we have at last achieved our political emancipations. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverties, deprivations, suffering, genders, and other discrimination. We have at last never and never again shall be its be this beautiful lands will again experience the oppressions of the another. The sun shall never set on so glorious of human achievement. Let freedom reign. Good God bless Africa. इतना बात कह करके वो आगे बढ़ता है। कौन ये बात कहा? नेल्सन मंडेला पूरा गेस्ट के सामने ये बात, जो अब कि सब लिबर्टी के साथ रहेगा, सब जो है भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल राइट्स होगा। हाँ, कोई किसी भी कास्ट क्रीड, कोई भी चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रंग से हो, कोई भी छुआछूत नहीं होंगी। और ये आपको सारा फ्रीडम रीन है। ये जो अब रीन स्टार्ट हुआ, ये जो आप शासन होगा, अब फ्रीडम का आज़ादी के साथ आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अफ्रीका पर गॉड भी जो है कृपा बरसाएं रखें। इस तरह की बात करके जो है वो आगे कहता है। और कंप्रेंशन यहाँ पे बना सकते हो। फ्यू moments later we will lifted our eyes in airway and a spectacular array of South Africa's jets, helicopter, troops, carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only the display of the pinpoint precision and military force, but a demonstrations of the military loyalty to democracy, to new government that had been the freely, fairly elected only the moments before the highest generals of the South Africa's defense force and medal from they gone by the saluted me and pleased. Their loyalty, it I was not unmindful of the facts that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, the Chevron and the Impala jets left the smoke trail and the black, red, green, blue, and gold, and the South African flag. This day was symbolized for me by the playing our two national anthem and the visions white singing no Kosi Siki Skylick Africa and black singings die stem the old anthems of the republic. All that they neither groups knew the lyrics of the anthems they once despised, they would soon know the word by heart. On the day of the inaugurations, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth. That's white skins peoples of the South Africa patched up and difference enacted a systems of racial dominations against to the dark skinned peoples of their own land. The structures they created form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has never known. Now, in the last decade of the 20th centuries and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that's recognized rights and freedoms of all peoples. That day
had come about through the unimaginable sacrifice of the thousand my peoples whose suffering and grace can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That's long and noble line ended and now begin again with no again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. The policies apartheid created a deep and lasting wound in my country, in My country. and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt, but its decade of the operations and brutality had another uni unintended effects, and that was that the produce the Olivers, Tambos, Watler, Sicilus, and the cheap Lutheris, the Yusuf Dadus and the Bram Fishers, the Roberts Sobukevi of our times, men of such a extraordinary. Oliver Tambo, Wortler, Sisulu, Sulu, Chief Lithu, Luthu Lee, Yusuf Daddu, Bram Fischer, Robert Sobu Kave. क्रेज एंड कर दूं? चलो रहने दो और है पर एक दिन पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 आगे से हम लोग करेंगे ठीक है